Good morning, students. I am Deepthi over here, and I am taking the session of class 2, subject English. And this is my lecture 2 of lesson 1, alphabetic order, in which I am going to tell regarding the alphabets and alphabetic orders. As you have known about the alphabets in your previous classes also, as well as in lecture 1, it has been already told what are alphabets and what is the order of the alphabets. अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या है, आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया गया है. दिस इज़ द रिविज़न लेक्चर इन विच वी विल recall the things. हम उन्हीं चीज़ों को दोहराएंगे. So, the contents which I am taking in this lecture are: I will recall and write alphabets, and you will also write the same alphabets with me. You have to write. आपको लिखना है मेरे साथ. Then use of alphabetic order. I will tell you what is the use of alphabetic order. आप alphabetic order कहाँ कहाँ use करते हैं. Then how to arrange words alphabetically. Alphabetically हम words को कैसे arrange करते हैं. I will tell you and explain you. मैं आपको बताऊंगी और उसको explain भी करूंगी. Then we will take a activity regarding it. और फिर हम एक activity लेंगे. Now a small rhyme I will play for you regarding the alphabets. Alphabets के लिए बारे में आपको एक छोटी सी poem सुनाते हैं. Now listen. आई होप आपको ये राइम अच्छी लगी होगी और आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स भी पता चल गए होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू राइट दोज अल्फ़ाबेट्स. मैं अब वो अल्फ़ाबेट्स लिखूंगी और आपको भी मेरे साथ लिखना है. नाउ दिस इज़ द पेज ओवर विच आई विल राइट. ये पेज है जिस पर कि मैं लिखूंगी और आपको भी ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखना है. First of all, I will mention the date. हम डेट लिखेंगे. I am not mentioning the date. मैं डेट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको वो डेट लिखनी है जिस दिन आप ये लेक्चर देखेंगे. Then over here you will write the day. और आप यहाँ वो डे लिखेंगे जिस दिन आप ये लेक्चर देखेंगे. Then in the center I will write lesson 1, and this is your lesson 1, that is alphabetic order, and this is your alphabetic order lesson 1 in your grammar book. And we are writing over here all the alphabets. So the alphabets are here: A, then I will write in small case, then B, I will write in small case also, then C, then in the smaller case, then D, again in the smaller case,
then E. Now the smaller one, F, the smaller one, G, the smaller one, H, small h, I, small I, J, small j, K, small k, L, small l, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So I hope you understand how you have to write. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are the alphabets and they are all in order. We know that English, we have 26 letters. And by the combination of these letters, we make different words. हम इन लेटर्स के कम्बिनेशन से ही डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. एंड देयर आर डिफरेंट वर्ड्स, more than 1000 words in the dictionary, and we don't know the meaning of those words. हमें उन words का meaning नहीं पता होता, and we have to find those words. उनका अर्थ जानने के लिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं. तो एक तो हमारा ये यूज है अल्फाबेटिक ऑर्डर जानने का. नाउ इन अ डिक्शनरी ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. डिक्शनरी में हर एक वर्ड अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा होता है. सो टू फाइंड अ वर्ड, इसीलिए उस वर्ड को ढूंढने के लिए You need to search in correct alphabetic order. हमें वर्ड को ढूंढने के लिए करेक्ट सही अल्फाबेटिक ऑर्डर का पता होना चाहिए कि हमें वो वर्ड कैसे ढूंढना है. नाउ व्हाट इज अल्फाबेटिक ऑर्डर? अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है? When words are arranged in alphabetic order in alphabet A to Z, then the words are said to be in alphabetic order. जब हम words को A से Z तक अरेंज करते हैं तो वो words क्या कहलाते हैं कि those words are in alphabetic order. कि वो word जो हैं वो किस कैटेगरी में रेज कर रहे हैं? दे आर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. नाउ फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बैलून, केक,
doll. These are 4 words, and let's see, are they in order? The first letter of the word is A. The first letter of balloon is B, and the first letter of cake is C, and doll is D. So A, B, C, D. So they are in alphabetic order. I hope you understand that these words are in alphabetic order. Then we will take second series: flower, giraffe, nest, toy. First is F. So the letters in all the words F come first. F सबसे पहले आता है इन्हीं सभी लेटर्स के, जो लेटर्स इन वर्ड्स में है उनमें सबसे पहले F आता है. Then G comes, then N, and then T. So they are also in alphabetic order. ये 4 वर्ड्स भी alphabetic order में हैं. But there is a difference. The first series is consecutive. पहली जो सीरीज है वो consecutive है. consecutive का मतलब है एक के बाद एक, one after other, कि पहले A आता है उसके बाद B आता है, then C, then D. But second is non consecutive. वो सीरीज में नहीं है, because F के बाद क्या आता है? E, F, G. G आता है, G के बाद क्या आता है? H, but there is N. So it is non consecutive. तो ये चीज तो आपके समझने की नहीं है. It's just a formality I am telling you. आपको यही समझना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कैसे होते हैं. Now I am taking an example for you. Arrange the following words in alphabetic order. हमें ये सारे वर्ड्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने हैं. hen, cat, ship, fruit. और हमें क्या देखना है? फर्स्ट लेटर H, C, S, F. I hope you understand. We have to see the first letter of the word. So over here C come first in the alphabetic order. So in the series first will come cat. पहले cat आएगा. Then after C D. D is not here. E is not here. F. E is not here and even F is here. So second word will be fruit. F-R-U-I-T. After F, G, H, then H, hen, and last one is ship. Now I hope you understand that how we will arrange the words in alphabetic order. हम वर्ड्स को कैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखते हैं. Now there are 2 rules to make a alphabetical series. The first rule is, if words begin with different letter, then arrange the word such that the first letter of the word are in order of the alphabet. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. hen, cat, ship, fruit. आपको यहाँ सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है and you have to arrange these words in the alphabetical order, and you very well know first what will come? Cat, then F, fruit, and then hen, and after that ship. I hope you understand कि हमें पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है. The first letter C comes, then after C F comes, then after F H comes, and then S, and we arrange them in a
अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, हमने इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. नाउ एक्टिविटी टाइम. Name of family members, in which what I will take name of family members and I make a list of the family members from the beginning. You can say from the elder one. जो सबसे बड़े हैं उनका नाम मैं पहले लिखती हूँ. राम grandfather, then Poonam grandmother, then Harsh son, then Abha. Abha is wife of Harsh. Now a small kid in the family. Tanishq. And a girl is also there in the family. Bhumi. Now these are the names which you have to arrange in alphabetic order. So first what you have to see, the first alphabet A. Is any person's name with A? Yes, Abha. So we will put over here. First name will be Abha. Then we will find B. B is there. Bhumi. C is not there. D is not there. E is not there. F is not there. G is not there. H is here. So Harsh. I is not there. J, K, L, M, N, O, P is here. So we will write Poonam. Q, R is there. Ram. And we have the last name, that is Tanishq, will come in the end. So this is the activity for you. This activity I have done. You will do the same activity. Write the name of your family members and then make a alphabetical series of those family members. I hope you understand. आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है. Now we will move to rule 2. In rule 2, words beginning with the same letter should be arranged. Over here we have the words in which some words are of starting with the same letter. So what we will do in such cases, such that their second letter are in order of alphabet. So we should take care, we should find it out the second letter. And if the second letter are same, then arrange the third letter and so on. So like here, first word is cake, second word is chocolate, then milk, then butter, then tea. So these are the words which we have to arrange in alphabetical order. And how we will arrange, I will show you. So let's see. First of all, we see that we find it out. A, if A is here, no. B, yes, B is here. Butter, we put butter over here. Then we will find out C. So we have two words with C, cake and chocolate. So first word is same, the first letter is same. So we will move to the second, A and H. Which will come earlier? A. So we will write over here cake and then
chocolate. Then we will find out D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M is here. Milk, we put milk over here. And the last but not the least will be the next and the last word, that is T. I hope you understand कि हमें अगर सेम लेटर से दो वर्ड्स मिलते हैं तो हमें सेकेंड लेटर को देखना है कि सेकेंड लेटर में कौन से वर्ड का लेटर पहले आता है. एंड इन दिस वे वी विल मेक द alphabetic order list, that is alphabetical order list. I hope you understand with the help of the example. Now, as I have told you that if we have the words with same letter, over here you can see that dress, dog, decorate, daffodils are the words which have same letter. The first letter is same, D, 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 D. So we will find out the second one. A, over here A. So this will come first. Is B there? No. C, no. D, no. E is there. So this is the second one. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O is here. This is fourth one and this is the fifth one. So we will write daffodil, decorate, sorry, this is the third one and this is the fourth one, dog, and then dress. I hope you understand. So we learn alphabetical order, how we arrange given set of words in alphabetical order. We also learn this also. So I hope you understand and you can make your own list of your favorite fruits. First of all, you write down your favorite fruits. Then you arrange the list in the alphabetical order. You can write your favorite cartoon characters. Then make a order. Like this, it can be a game. ये आपके लिए गेम भी होगा और आप alphabetical order में चीज़ों को, थिंग्स को अरेंज करना सीख जाएंगे. एंड इट कैन बी अ प्लेस, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई नेम भी हो सकता है. एनीथिंग कैन कम इन दिस ऑर्डर. एंड वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन डिक्शनरीज. हम डिक्शनरीज में यूज करते हैं. आपके पेरेंट्स फोन में जो कॉन्टेक्ट सेव करते हैं दैट आर ऑल्सो सेव्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेव करते हैं. नाउ इट्स होमवर्क टाइम एंड योर होमवर्क विल बी ऑन Adquark, and I will give you assignment number 4 of this particular chapter, that is lesson 1. I will give the assignment for 4 for lesson 1 and even one more assignment of this lesson 1, assignment number 5. Both the assignment you will find on the Adquark. Assignment number 4 will be given on the same day on which you see the lecture. जिस दिन आप ये लेक्चर देखेंगे उस दिन आपको असाइनमेंट नंबर 4 जो है आप एडक्वाक अकाउंट पर देख सकते हैं. एंड द नेक्स्ट डे यू विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द सेम. एंड ऑन द सॉल्यूशन डे आई विल असाइन again a new assignment, that is assignment number 5, and then on next day the solution is there, and after that there will be a test of this particular lesson.
सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है. एंड यू जस्ट प्रैक्टिस ऑफ द सेम. एंड इफ यू प्रैक्टिस, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स. थैंक यू.